उनको स्टार्ट आप इन लोग भी बंद करे हैं, अभी नहीं जा सकता। पढ़ो, इन लोग बंद करे और तुम नहीं जा सकते, इससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना। ओके तो इन लोग स्टार्ट करेंगे। रिद्धि So, hello and good evening, everybody. Welcome to this workshop. First of all, good evening to all of you. I hope that you all are doing fine and good. So, can you all hear me? Please let me know in the chat box. All of you are able to hear me? Okay, so great. Quickly join the meeting, quickly join the class. Everyone, please. I have shared the link in the group. So, using that link, I will request all the students to join as soon as possible. And remember that मैंने आपको पहले ही बोल दिया है ग्रुप के अंदर that it is going to be live. So, and recordings आपको नहीं मिलेगी. So, make sure कि you watch this session completely live. Okay, if you miss anything, then you won't be able to watch it again afterwards. So quickly join the class, and here we are going to start. But before that, let us wait for some more minutes for other students to join the class. And till then, I want everyone that आप अपने materials, अपने tools के साथ ready रहो. Okay, whatever tools and materials you have, a drawing sheet, drawing pencils, then blending tools, whatever tools you have, please get ready with that. And very shortly we will start the class. So make sure that you are all set with that, and you can hear me and you can see the screen as well.
Okay, I can see your messages as well. So hello Vaishnavi, hello Shraddha, Prajakta, Kalyani, Minal, Narendra. Hello everyone. Okay. So from the names which I can read, I can see that many of you are my student. Those who are already learning, those who are already been the part of this kind of workshops or the classes, live classes that I'm taking. So it's good to see you as well that you are here to learn. ठीक है, आप फिर से यहाँ पे जुड़े हैं कुछ सीखने के लिए. Okay. So first of all, let me know if those students who are new here, okay, जो यहाँ पे नए हैं, और let me just ask for everybody, just tell me that from where you are, okay? From where you are, write down the name of your state. So let us see from where we have the students with us. कहाँ से लोग जुड़े हैं हमारे साथ आज के क्लास के लिए? Let us see that. So please let me know quickly. Okay, so we have Vaishnavi from Mumbai, Maharashtra. Okay, I want everybody to write. Okay, so because I won't be able to hear you, so whatever I'm asking you, whatever questions you have, आपको लिखना पड़ेगा. So please write it down. Then we have from Pune, Gurugram, Mumbai, Kerala, Bangalore. Okay, uh, Puducherry. I'm here from Coimbatore, basically from Gujarat. Okay, Haryana, Bangalore, Chennai. Okay, great. And okay, we have someone from Telangana as well. All right, so I am from Surat, Gujarat. Okay, those who are already my student or those who have been following me on social medias, they might know I am from Surat, Gujarat. And I have been into this industry or into this field, okay, in this art field since last almost 7 to 8 years. My journey has started in the year 2016. Okay, 2016 में मैंने 12th pass out किया, and after that I have chosen this art field, and from that time period till now I'm completely into this field. I'm doing everything about art only. Okay, so now let me know that how many of you are loving graphite medium, means pencil medium. Okay, everyone has their own choice. किसी को कुछ और मीडियम पसंद है, किसी को कुछ और. So let me know that not only graphite, आपको कौन सा मीडियम ज्यादा पसंद है. So write it down in the chat box. Which is your favorite medium? Which one is your favorite medium? Please write it down in the chat box. वैष्णवी, आई एम आस्किंग अबाउट द मीडियम. ओके, पेंटिंग जो आप बोल रहे हो, एक आर्ट का एक फॉर्म हो गया, आर्ट एक एक चीज हो गई वो पेंटिंग. आई एम आस्किंग अबाउट द मीडियम लाइक ग्रेफाइट, चारकोल, ऑयल पेंट्स, कलर पेंसिल. ओके, सो लाइक दैट. So we have the answers as follows: graphite, pencil, charcoal and oil pastel, pencil art, graphite, color pencil, okay, acrylic. Shraddha is saying acrylic, Vaishnavi says graphite, Priyanka saying pencil art, Nikita saying charcoal and oil pastel. Okay. Minal Khair, you are saying all. Okay, that's good. Ritishwar, right? You are saying pencil art means pencil medium. Okay, so those who don't know, pencil and graphite means both are same. Okay, when we say graphite, दैट इज अ नॉर्मल पेंसिल जो हम यूज करते हैं, उसको हम प्रॉपरली बोलते हैं ग्रेफाइट मीडियम. ठीक है, बिकॉज पेंसिल के अंदर देन वी हैव चारकोल एज वेल एज कलर पेंसिल ऑल्सो. ठीक है, सो देर इज अ स्पेसिफिक नेम ग्रेफाइट. ओके, सो these are your answers. Now my favorite medium is also graphite. So those who are following me, वो लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि मुझे ग्रेफाइट बहुत पसंद है. आई मोस्टली डू द आर्ट वर्क्स इन ग्रेफाइट मीडियम. ओके, ऑन माय सोशल मीडिया यू विल फाइंड दैट कि मैंने ग्रेफाइट पे बहुत आर्ट वर्क्स बनाए हैं. ठीक है, देन अदर देन दैट आई मेक आर्ट वर्क्स यूजिंग
graphite and charcoal. Okay, combination of graphite and charcoal, and then the second most favorite medium is color pencil. Okay, आफ्टर ग्रेफाइट एंड चारकोल जो अनदर मीडियम जिसके अंदर मैं आर्ट वर्क्स बनाता हूँ वो है कलर पेंसिल्स में. एंड the other mediums which I have done or which I have explored are say graphite, charcoal, and color pencil. I have done oil paints also, not that much, but I have tried that. Okay, oil paintings, then watercolor also, soft pastels, oil pastels, acrylic. Then I have done wall painting as well. Then I know some, I have some amount of knowledge in digital art as well. So almost around 9 to 10 different mediums I have experienced. Okay, so but I'm completely into this graphite charcoal and a little bit of color pencil medium. ठीक है, ये जो दो तीन मीडियम्स है इसको मैंने completely explore किया है, इसको मैंने मास्टर्स किया है, वो मास्टर किया है इन दो तीन मीडियम्स को. So whenever if you ask me anything about these mediums, I will completely help you in that. Okay. Other than that, दूसरे mediums के बारे में अगर आप कुछ पूछोगे, I will help whatever knowledge I have. Okay. उसमें से मैं आपको जरूर help करूँगा. All right. So now, without wasting any further time, we will start our practical session. Okay. So as I have told you that this workshop is for kids, but if you see, it's not only kids. If you are young, if you are adult, or if you are aged person, आप भी सीख सकते हो, आप भी ये चीज कर सकते हो. तो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ किड्स के लिए. Why I have mentioned kids? Because मोस्टली मेरे जो क्लासेस या फिर वर्कशॉप्स होते हैं वो मैं एडल्ट्स के लिए या जिनकी उम्र 12 प्लस होती है, राइट? Those whose age is 12 plus, for them only I am conducting classes and teaching to them, right? But I'm getting so many queries and so many, लोग मुझे पूछते हैं कि किड्स के लिए क्या आप करवाते हो क्लास. So I have decided that now I should start for them as well. Why should I? No, मैं उनको क्यों पीछे छोड़ूं? Like, so I have decided that let me teach to them also. And yeah, it's not only for kids. If you are an adult, if you are young or any age group of you are, आप सीख सकते हो. ठीक है? So now we will start without wasting a single minute. So here I'm going to switch my camera. So make sure कि आपको वो दिखाई दे रहा हो. And yeah, I will also request everyone that make sure कि आप अपने कैमरास एंड माइक्रोफोन्स, ठीक है, आप उसको ऑफ रखिए. एंड ऑल्सो आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आपके पास ईयरफोन हो तो आप उससे ट्राई करो कि आप क्लास को अटेंड करें सो दैट यू विल हैव अ बेटर एक्सपीरियंस. Okay, use the earphone if possible, not compulsory, but if possible, use the earphone to get the better experience of this class. Now, let us move towards the desk and मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें मैं यूज कर रहा हूँ एंड कौन कौन सी चीजों का आपको काम होने वाला है. So here I am using a paper which is of A4 size. ठीक है? The paper which I am using right now is of A4 size. Then Uh, again, it is not compulsory that you have to use A4 only. You can use A5, means A4 and F5. From any of this, you can use any size of the paper or any other than that. आपके पास कोई दूसरी size है तो वो भी आप use कर सकते हो. ठीक है? Then the pencils which I'm going to use. The pencils which I'm going to use are Faber-Castell. Okay, these are the pencils जो मैं use करने वाला हूँ. So again, not compulsory कि आपके पास यही होनी चाहिए. Whatever pencil set you have, you can use them. Understood? Now, other than pencil and paper, you will need some tools
as blending tools. So as you might know that in blending tools we have brushes, टिश्यू पेपर, देन कॉटन बड्स, ये सब ब्लेंडिंग टूल्स के कैटेगरी में आते हैं, राइट? पेपर स्टम्प, सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज ब्लेंडिंग टूल्स. ओके, these are different kind of blending tools which you can have. So इनमें से आपके पास कोई भी हो आप यूज कर सकते हो, whether you have blending stumps, you have brushes, if you have a tissue paper, you can use them also. If you have cotton buds or earbuds, and like these cotton tips or ear tips, you can use those as well. Okay, so ये हो गए हमारे blending tools. Now next जो चीज आपके पास होनी चाहिए वो है इरेजर. नाउ अगेन हियर एज एन आर्टिस्ट मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के इरेजर होंगे. ठीक है, आई विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरेजर, बट यू एज अ स्टूडेंट इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपके पास भी सारे इरेजर होने चाहिए, बट एटलीस्ट एक नॉर्मल इरेजर हो तो बेस्ट है. Okay, make sure you have at least a normal eraser. But other than that, if you have this kind of eraser like mono zero eraser and kneadable eraser, that will be fine. Okay, ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा if you have these erasers as well. Understood? So here we have this another tool which are called as erasers. Okay, normal, then we have kneadable eraser and a mono zero eraser. Okay, so these are the erasers. Make sure you have at least one of them. And from blending tools also make sure you have at least one or two. Okay, and if not, अगर आपके पास कोई भी टूल अवेलेबल नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ पेपर एंड पेंसिल है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट? हियर यू आर हियर टू लर्न. ठीक है, सो आप यहाँ पे सीखो, यहाँ पे लर्न करो, फिर उसके बाद आप टूल्स परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से. बट फॉर राइट नाउ मेक श्योर दैट यू लर्न प्रॉपरली. अंडरस्टूड? ऑलराइट. एंड yeah, other than that I don't think कि आपको कोई टूल की रिक्वायरमेंट होगी. So now just type ready in the chat box जब आप रेडी हो, and then we will start our practical work. And मैंने आपके साथ एक रेफरेंस इमेज भी शेयर की है, so I want कि you have that along with you. ठीक है, मैंने रेफरेंस इमेज भी आपके साथ शेयर की है, so make sure कि आपके पास वो हो. So just type ready as you are ready and we will start the practical now. We'll start our drawing where I will teach you that how you can draw or construct an object. कैसे किसी artwork को बनाया जाता है, कैसे उसकी शुरुआत की जाती है, right? As a beginner, mostly the mistakes which you do, I will show you that what you don't have to do. ठीक है, आपको क्या नहीं करना है, जो आप करते हो उसके opposite आपको क्या करना है. So I will show you that how to build an object, what should be your पाथ, आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कहाँ से शुरू करना है आपको. ठीक है, व्हाट शुड बी द प्रोसेस. आई विल शेयर दैट विथ यू कंप्लीटली. So please, I want everybody to write ready in the chat box because I can see that only one student is ready, that is Ritishwar. I want everyone you to engage. ठीक है, तो ही मुझे लगेगा कि आप लोगों को इंटरेस्ट है, अदरवाइज देयर इज नो meaning of taking this class. I'm taking this for you only, so please I will request that engage in this. आपको कोई भी क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग द क्लास जो मैं सिखा रहा हूँ, what I'm teaching, you can ask me on that point itself. Okay, and if you have any other questions जो इसके रिलेटेड नहीं है, जो मैं सिखा रहा हूँ उसके रिलेटेड नहीं है, I will request you to ask me at the end. Okay, all right, so I can see so many ready and yes. All right, so here we are starting and I'm also going to share the music. I hope कि आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है. Okay, I have shared the music as well, so make sure that you are able to hear that. Okay, so always remember कि whenever you draw,
ऑलवेज ड्रॉ यूजिंग द लाइट पेंसिल। ठीक है, आपके पास बहुत सारे पेंसिल्स के ऑप्शंस होते हैं। Got it? Here you have so many options in the pencil. It starts from 2H. यहाँ पे मेरे पास जो पेंसिल का सेट है उसमें शुरुआत होती है 2H से। Starts from 2H and here I have maximum 8B. ठीक है, जो मैक्सिमम मेरे पास डार्क पेंसिल है वो है 8B की। You get more than that also. You have 10B, you have 12B also. Okay, so those higher grade of pencils are also available in the market, but in this box I have from 2H to 8B. So always remember that whenever you draw something, whenever you are sketching something, okay, जिसके अंदर आप बाद में कुछ करोगे like shading or any color work or whatever you are going to do afterwards, in such case always use a light pencil. ठीक है, किसी भी आर्ट वर्क के अंदर जब आप शेडिंग करोगे या कोई कलर वर्क या कुछ भी करोगे तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप लाइट पेंसिल का यूज करो। इफ यू आर नॉट गोइंग टू शेड एनीथिंग, इफ यू आर जस्ट मेकिंग अ स्केच, एनी रफ ड्राइंग इफ यू आर डूइंग, यू कैन यूज एनी अदर पेंसिल। ठीक है, बट अगर आप कुछ शेडिंग करोगे उसके अंदर कुछ और काम करने वाले हो, मेक श्योर यू यूज द लाइट पेंसिल। सो हियर आई विल बी यूजिंग 2H pencil to draw. Okay, the light one. You can use 2H or H. Whatever light pencils you have, you can use any of them. Okay, so here I have chosen the light 2H pencil. So always remember that whenever you draw something, use light pencil. ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, मेक श्योर कि आपकी पेंसिल शार्प हो। एज अ बिगिनर ये मिस्टेक्स आप करते हो कि कोई भी आप जब पेंसिल उठाते हो जैसे आपको मिल गई वैसे ही आप उसको यूज करने लगते हो, राइट? यू आर यूजिंग इट इन व्हाटएवर कंडीशन यू आर गेटिंग, यू आर यूजिंग इट डायरेक्टली इन दैट कंडीशन। ओके, whereas you have to sharp it first. उसको पॉइंटेड बनाओ, अच्छी शार्प बनाओ, then you draw. Alright, so here you can see my pencil is already sharp, but I will sharpen it little bit more in my sharpener. I'll make it little bit more pointed. Okay, now here we start our drawing. Now the second common mistake which the beginner does is, जब उनको कुछ draw करने के लिए दिया जाता है तो what they do is they directly start making the outlines or the final drawing. Means if I say that जो मैंने reference image आपको दी है उसको draw करना शुरू करो, you start drawing that. What you will do, you will start making the all these things. ठीक है, आप ये सब चीजें बनाना शुरू कर दोगे। You will make this kind of shape over here. ठीक है, आप ऐसे शेप बनाना शुरू कर दोगे, then you will do all these things. Right? कुछ इस तरीके से आप बनाना उसको शुरू कर देते हो। Am I right? Please let me know जो लोग इस चीज के साथ एग्री करते हैं। If I say that you draw something or draw this, you start making like this. Am I right or wrong? Honestly, yes, right? So ये चीज जो आप करते हो वो गलत है। That is the first and the most important mistake that you are making. Got it? ये चीज आपको नहीं करनी है। तो डायरेक्टली उसका जो फिगर आपको नजर आ रहा है वो नहीं बनाना। You don't have to make what you see directly. Understood? Never make the final drawing or whatever you are saying, never make it directly as it is. Instead of that, you have to see that what basic structure or what basic shape is there in that object, और जो भी आप बना रहे हैं उसके अंदर बेसिक शेप क्या है उसका। ठीक है, and see that how much long, how much broad, वो सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। You have to calculate everything कि उसकी हाइट कितनी है,
कितना चौड़ा है, how much broad it is, all those things you have to calculate, right? So first what we will do, first we will decide that how much big we have to make, हमें कितना बड़ा उसको बनाना है वो पहले हम डिसाइड करेंगे. We will decide that. Understood? कि हमें कितना बड़ा या कितना छोटा उसको बनाना है. Do we want to make this much small? Do we want to make this much? Or do we want to make a full size? Okay, of full paper size. कितना बड़ा कितना छोटा आपको बनाना है वो आपको डिसाइड करना है. Got it? So we will draw up to this much normally. ठीक है? इतना बनाएंगे. So first I will draw the line and that also from the center of the paper. ठीक है, मैं दोनों साइड वो ऑब्जर्व करूंगा कि पेपर के सेंटर में वो लाइन बने. ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊं और somewhere over here I draw the line. No. Okay, try to draw in the center. If you make mistakes, no problem. Okay. Now, why I have drawn this line in center? Because if you see the reference image, you will notice that इसका means the object which we are going to draw, we'll see that उसका जो center है वो almost हमारे image के center में आ रहा है. Not 100%. Okay, it is slightly on the right side. ठीक है, ये जो पोर्शन है इट इज नॉट एग्जैक्टली इन द सेंटर, इज स्लाइटली द राइट साइड, बट फॉर योर लर्निंग, फॉर यू नो फॉर टीचिंग यू, मैंने इसको सेंटर में रखा था ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ आए. ठीक है, सो ऑलवेज फर्स्ट डिसाइड कि आपको कितना बड़ा बनाना है उसको, एंड उसके अकॉर्डिंग आप एक लाइन ड्रॉ कर लो. एंड रिमेंबर, मेक इट लाइट so that afterwards you can erase it, and जब आप उसको erase करो तो वो जो line है फिर दिखाई ना दे, उतना light आपको बनाना है. Understood? So this is our first step which we have done, and identifying how much big or how much small you have to draw, and according to that you have to draw the line. Now after this we will get back to that point कि उसका जो शेप है वो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा बेसिक शेप है. ठीक है, सबसे पहले जो हमारा मेन बॉडी है वो है ये हम देखेंगे. ये हमारा एक मेन बॉडी है, राइट? दिस इज आवर मेन बॉडी, राइट? एंड देन अराउंड दिस यू हैव सम डिफरेंट पार्ट ऑफ इट. यहाँ पे उसको आपका जो कप या फिर कैप है उसकी वो मिलेगी, राइट? यू हैव द कैप, देन यू हैव दिस what you can say, this opening जहाँ से liquid comes out, and this is the handle, the base, but this is your main body, right? So जो main body है उसका shape क्या है वो आपको देखना है. What is the main shape of this body? It is a rectangle shape, right? It's a rectangle, right? So before drawing the rectangle, again see that जो आपने ये डिसाइड किया है, ठीक है, कि मुझे इतना बड़ा बनाना है, उसके अंदर आप देखिए कि वो कितने हिस्से में आएगा. मीन्स व्हाट विल बी दी पार्ट ऑफ दैट रेक्टेंगल. ठीक है, कहाँ से वो शुरुआत करेगा, फ्रॉम हियर एंड देन समवेयर ओवर हियर दैट रेक्टेंगल विल बी फिनिश्ड. Okay, we have selected that area. Don't worry about other areas right now. दूसरे एरिया की अभी आप चिंता मत करो. जैसे जैसे हम ड्राइंग बनाते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली बनता जाएगा. Okay, and if it is not becoming correct, or if we are doing something wrong, can erase it and correct it again. Okay, so don't worry about later on. Right now, as we are planning and doing, हम ऐसे ही नहीं बना रहे. Okay, we are not drawing blindly. We are planning and we are doing. So if you make mistakes, we can correct them as well. Okay? Alright. So now, after this, मैं देखूंगा कि मेरा जो rectangle है
उसका लॉन्गेस्ट पोर्शन क्या है, मीन्स विच इज द ब्रॉडेस्ट पार्ट इन माई मेन बॉडी। ये जो मेरा मेन बॉडी है राइट, यहाँ से यहाँ तक का, आई एम नॉट काउंटिंग दिस कर्व राइट नाउ, ठीक है, मैं इसको नहीं गिन रहा हूँ, आई एम जस्ट काउंटिंग दिस एरिया। So I see that which is the broadest part in this portion, this one, right? ये जो lower area है, this one, this is the broadest one, got it? So आपको same करना है दोनों तरफ से, ठीक है? So just draw a line, see that how much broad it can be. बहुत ज्यादा मत कर देना, इतना आपके ड्राइंग के हिसाब से, जितना बड़ा बना रहे हैं उसके हिसाब से आपको रखना है, ठीक है? Let us mark some more guidance, some more points so that it will become easy for you, ठीक है? अदरवाइज वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो फॉर पहले हम क्या करते हैं कि सारे मार्किंग्स जो है लाइन के ऊपर, इसके ऊपर वो हम मार्क कर देते हैं। वी जस्ट मार्क ऑल द गाइडेंस पॉइंट फर्स्ट। सो जस्ट ऑब्जर्व दैट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। ट्राई टू ऑब्जर्व दैट फ्रॉम हियर, जो हमारा बेस बनेगा ये वाला, फ्रॉम हियर टू हियर व्हाट डिस्टेंस इट इज इन कंपेयर टू दिस पॉइंट। ये जो लाइन है, ये जो एरिया है हमारा, ये जो मेन बॉडी का, उसके कंपेयर में ये कितना, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है वो आपको ऑब्जर्व करना है। सो ये मैंने मार्क किया है। तो इन कंपेयर टू दिस व्हाट शुड बी दी हाइट और डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, ये कितना बड़ा होना चाहिए वो मैं ऑब्जर्व करके रफली मार्क करूंगा। सो इफ आई ऑब्जर्व माय रेफरेंस इमेज एंड आई एम ऑब्जर्विंग माय ड्राइंग, तो व्हाट आई फील दैट वो हल्का सा यहाँ तक होना चाहिए, समवेयर अप टू दिस पॉइंट। Okay, so I have marked that point, this one also. Again I am repeating, मैंने ये point mark किया है जो ये कर्व है, ठीक है, इस वेसल का वो पॉइंट मैंने मार्क किया, ये वाला मैंने, इसका बेस जो है वो मार्क नहीं किया है, ठीक है। अगेन बेस मार्किंग विल बी डिफरेंट, वो भी एक अलग से पॉइंट आएगा। Understood? Then let us move on the top side. Top side we will see which markings we have to do. So the first will be for this. ये जो point है, ये वाला, so just see that from here how much top you have to go. ये जो line है यहाँ से, okay, we have marked this one over here. So from here, so how much distance you have to give for this area? It will be somewhat at this point. All right. See, it is not जब आप शुरुआत करते हो, जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपने हाउ मच बिग यू हैव टू मेक, देन इट डजंट मैटर कि आप ऊपर से शुरू करो या बॉटम से, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाई, यू हैव ऑलरेडी प्लान दैट आई हैव टू मेक दिस मच, ठीक है, यू हैव ऑलरेडी प्लान दैट आई हैव टू मेक दिस मच, सो इट डजंट मैटर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टॉप और बॉटम। इफ यू आर डूइंग विदाउट प्लानिंग, at that time you have to think that कहाँ से मुझे शुरुआत करनी है, and again that depends upon your subject, what you are drawing, so it is completely a different in-depth topic. Got it? All right, so here I have done the first marking, which is of this point. Now अभी आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ का जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन जा रही है राइट, दिस वन, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, इट स्मॉल अप टू दिस। एंड या आप अगर इमेज को बार बार जूम इन जूम आउट कर रहे हो तो ध्यान रखना कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। अगर आप पहले इमेज को ऐसे बना के फिर मार्किंग कर रहे हो तो आपको डिस्टेंस कम नजर आएगा,
फिर आप उसको थोड़ा जूम करके मार्किंग कर रहे हो तो आपको डिस्टेंस ज्यादा नजर आएगा, तो उसमें आप नो यू कैन क्रिएट अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ। सो मेक श्योर कि वो भी चीज आप दिमाग के अंदर रखो, ठीक है। एंड आई गारंटी दैट मोस्टली आप लोग ये मिस्टेक करोगे ही। क्या मेकिंग फ्रॉम इमेज, आई गारंटी दैट आप ये मिस्टेक करोगे कि जब आप ऐसे बना रहे हो नॉर्मल, आपको कम डिस्टेंस नजर आ रहा है, आप कम डिस्टेंस रखोगे, फिर आप थोड़ा जूम करके करते हो, विल नो ड्रॉ बिगर डिस्टेंस, आप थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस रखोगे, सो उसमें आप गलत स्टेप ले लोगे। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखो। Got it? So yeah, we were on this line, right? So I have done the marking for that also, and then again the top one. For that I will just slightly draw it, and it will go up to this point. Okay, so almost I have done the marking for my all these areas जो मुझे help करेंगे build my drawing, to build the different part of my object. Understood? Now let's get back to that point कि हमें कितना बड़ा बनाना है, right? So observe it that जितना आपने ये main body बनाया है, right? The distance that you have taken of this main body, okay, from here again remember these points, and I am pointing you out again and again that remember कि ये point कौन सा है, ये point कौन सा है, just remember that, ठीक है। अदरवाइज आपने एक पॉइंट भी ऊपर नीचे कर दिया, योर ड्राइंग विल बी कंप्लीटली messed up. Understood? So just see that from this point to this point, from here to here, जो आपने हाइट ड्रॉ की है, जो डिस्टेंस आपने रखा है, उसके अकॉर्डिंग ये कितना मोटा होना चाहिए, राइट? If I show you the simple example, let me just have a paper. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये जो डिस्टेंस है ये वाला, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक बना रहा हूँ इतना बड़ा, ठीक है, I'm making this much big, and if I'm taking this width, ठीक है, इसकी जो मोटाई है, इसका जो चौड़ापन है, if I'm just making it this much, it will be wrong, ठीक है। Why it will be wrong? Because you just see height and you just see the width. In compared to your height, your width is very small, very less. That will be wrong. Also, in compared to my height, for example, अगर मैं इतना बड़ा बना रहा हूँ, if I'm making this much big only, right? And then if I'm taking its width, this area, right? अगर मैं इसको इतना बड़ा बना रहा हूँ from here to here, then again that will be wrong, right? आपका ड्राइंग फिर पूरा ऐसा जाएगा, which is again wrong, right? दोनों in this both the cases your drawing will be wrong. So you have to observe these things कि जो height आपने decide की है उसके compare में उसकी width क्या होनी चाहिए, that you have to observe. Okay? So observe your image carefully, observe your distance carefully कि आपने कितनी height select की है, ठीक है, उसके हिसाब से वो कितना होना चाहिए. So what I can observe is that whatever height you have taken, its half will be your width. इस अगर आपने height इतनी ली है तो उसका आधा अगर मैं इतना करूँ तो वो इसका जो width है वो होगा, which I can observe. Okay, and it can be slightly more, not more than that. Okay, so let me just show you that it will be around that only. ये जो इसकी width है यहाँ से यहाँ तक, I can make you sure that not 100% but it will be around that. ये जो width है वो कितनी होगी मैं बता देता हूँ आपको. It will be near the half of this. ठीक है, इसका जब मैं हाफ करूंगा तो उसके अराउंड होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा.
ठीक है, but it will be somewhere half of this. So we will just make sure I will make the use of scale, and let me show you the distance. Okay, so for example, let me set it to the exact number. Okay, I have set it to the exact 7 सेंटीमीटर. ठीक है, मैंने इसको एक्जेक्टली 7 सेंटीमीटर पे सेट कर दिया है. इसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है. सो इसका डिस्टेंस जो है ये वाला वो नियर अबाउट 3.5 और 4 इट विल बी. Okay, near about 3.5 or 4 it will be. So let us check. Okay, so it is almost around 5.5. Okay, so 1 centimeter or 1.5 centimeter extra. Understood? 1.5 centimeter extra, so it is 5.5. So I have told you that it will be slightly more than that. Got it? So like this way you have to observe. Understood? So whatever height you have taken, ये जो आपने लिया है उससे अगर उसको आप आधा करोगे तो उससे थोड़ा ज्यादा रख के आपको ये लेना है. Understood? So these are the simple ways, easy ways how you can draw your own drawing. कैसे आप उसको सिंपल वे में डिवाइड कर सकते हो. Okay, ऐसे आपको सिंपल जो प्रोसेस या ट्रिक्स होते हैं वो आपको यूज करने हैं. राइट? तो व्हाट आई विल डू, जो मैंने ये हाइट ली है उसको मैं अगर आधा करूंगा उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, दिस मच, दैट विल बी माय वेट. सो रफली आई विल मार्क इट. ठीक है, एंड लेट मी जस्ट ड्रॉ अ लाइन आल्सो दैट इट कैन हेल्प मी फर्दर. Okay, I will keep it up to this point. Okay, so now same I will observe on this top side this distance and I will try to compare it with this lower side. ठीक है, ये जो मैंने lower line बनाई है इसको मैं इसके साथ compare करूंगा. So you can see that it is slightly small. Okay, so ये जो मैंने बनाया है, or you can make a straight line. Okay, you can do like that also. ऐसे भी आप कर सकते हो. From here you can draw a straight line. Okay. Then उसको आप थोड़ा अंदर की साइड ले लो up to this point. और this much. ठीक है, दोनों तरफ से. और slightly outside of here. So ये again and again जब आप observe करोगे तो आपको समझ में आता रहेगा. तो your mind will work if you observe continuously. Again I think I need to relocate it. Somewhere up to this point. ठीक है. Then I will erase the other point so that आपको confusion ना हो. So these are the ending points of my upper part. Okay. These are the ending point of my lower portion. This area. This is for the upper point. Now, simply you can draw. Okay. Just see that कहाँ से कितना कर्व जा रहा है. Then you know ये जो एरिया है वहाँ पे कितना डिस्टेंस रखना है. एकदम अंदर नहीं लेना है या स्ट्रेट नहीं रखना है. Just observe that. I draw a straight line first for this.
make it simple for myself. Okay. Then slowly and slowly I will try to give the proper curve shape. Okay. Same thing on this direction. So ये सिर्फ आप shape एक ऑब्जर्व करो and try to get the exact shape on this side also. ठीक है, ये जो shape आपको मिला है, try to hold the same shape on this opposite side. Because definitely जो यहाँ पे है वो same यहाँ पे होगा, both will be equal. ऐसा तो है ना कि एक ज्यादा कर्व होगा एक कम कर्व होगा, until and unless you have such kind of utensil. Okay, but in our case you can say it is symmetrically equal. Both the sides same है. ठीक है, I will try to hold the same shape over here. राइट, अब इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं नीचे वाला एरिया जो है उसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ. Then if you feel that it should be slightly more or less, you can make the changes. Okay, and definitely you will able to identify. जैसे जैसे आप बनाते जाओगे, आप ऑब्जर्व करते जाओगे, आपको खुद वो चीज you will be able to feel that. कुछ चीज खुद आपको फील होगा कि थोड़ा ज्यादा या कम करना है. You can change it according to the requirement. Okay, done. Now you can draw this lowest part also. This base है उसका, वो भी आप draw कर सकते हैं. For that just see कि कहाँ से शुरुआत हो रही है. ठीक है, यहाँ से वो बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, कहाँ से बन. Just check out the starting point on the both the side. So will be somewhere from this point. Center. यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटर आ रहा है, almost from that point it will be starting. Same on this side. Okay. Understood? Now let us build the top portion with the same way. So यहाँ पे मैं थोड़ा zoom कर देता हूँ so that you can see it properly. I hope that you are all understanding it because मैं बहुत simple तरीके से आपको सिखा रहा हूँ. So I hope कि आपको समझ में आ रहा है. Okay, now we will be building its top portion. So then first you have to draw this mountain like shape, but before that just draw this. तो यहाँ का उसका जो पोर्शन है उसकी विड्थ कितनी आएगी, दिस वन, ये जो है
And then over here also, first you draw that portion जो अंदर की साइड जा रहा है, right? एक कर्व शेप जो है, अब पहले वो बना दो. हियर ऑल्सो यू हैव टू सी कि कितना कर्व बनाना है. एकदम इतना नहीं करना है, एकदम स्ट्रेट भी नहीं रखना है. ऑब्जर्व दैट एज वेल, हाउ मच कर्व इट इज गोइंग. Okay, up to this point it is going curve. All right, next we will see that ये जो point कहाँ पे टच हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट. ठीक है, सो वो डिस्टेंस आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ से ना अंदर की साइड वो टच हो रहा है, somewhere up to this point, and it will be equal on both the sides. Okay, now here observe properly the shape. Okay, then draw the remaining shape. All right, now let us draw the same way the top portion. Okay, so this way you have to draw this. Now same way you can draw this portion as well. Okay, so I will now make it real quick, otherwise it will take too much of our time to just draw. ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्विकली बनाऊंगा. जस्ट सी दैट हाउ मच हाइट यू हैव टू टेक. सो ये ऑलमोस्ट जो आपका ये पोर्शन है उसके इक्वल आएगा, राइट. Then see that how much distance you have to keep. Now यहाँ पे आपको देखना है कि कहाँ से शुरुआत हो रही है, वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है. From here and the lower portion is from here. ठीक है, and then simply have to make the shape. Okay, just observe that what is the shape of this. It is not as is going like this. ठीक है, यहाँ से कर्व हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, क्रॉस में है, ऐसे स्ट्रेट भी नहीं है. दिस कर्व इज गोइंग आउटसाइड, स्ट्रेट नहीं है. तो वो आप अच्छे से ऑब्जर्व करना, राइट. फ्रॉम हियर इट इज नॉट स्ट्रेट, इट इज गोइंग स्लाइटली लाइक दिस.
this way. Okay. Same. For this portion also. इसको मैं हल्का सा और कर्व बनाऊंगा. Because when I'm observing it again and again, I feel that what needs to be corrected. And see, अगर आपको भी लगता है कि कहीं पे आपको थोड़ा correction करने की जरूरत है, without saying, do it, okay? And if you are able to observe that if you're doing properly, definitely you will be able to identify the mistakes or corrections on your own. Again, slightly more I have to make this shape. Okay, so I will correct this later on. Here it is slightly going outside. Okay, and I will just okay. All right. Then the same way you have to create the handle. Got it? So now it will take more time. So I will leave it as it is. Okay? Because now I have to show you the shading as well. So we'll start the shading now. We'll teach you that how to do the shades also. So अगर आपने यहाँ तक बना दिया है, okay, just let me know in the chat box. We'll start the shading. Don't make the handle, okay? You can do it after this class and you can do it on your own. So for now you have to just leave it up to this. So अगर आपका यहाँ तक हो जाता है मुझे please बता दो chat box के अंदर. And if you are ready for the shading portion, shading part, type ready in the chat box.
Okay, yes, we are ready. Done. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 students have only done out of 28. What about the others? Done this much? Done? Okay, great. Now let me zoom and we will start the shading from the top portion. So always remember that start your shading from the top side, not from the bottom side. कभी भी आप shading करो, color करो, कुछ भी करो, हमेशा top से शुरुआत करनी है. Because if you start from the lower side and जब आपने अगर नीचे shade कर दिया फिर जब आप ऊपर shading करोगे, you might spoil your shading which you have done in the lower side. ठीक है? Might spoil it with the hand. So always start from the top to bottom. And again, shading is done in the layering process. Layer by layer it is done. So आपको पहले एक layer लगानी है, then second layer, then third layer, then fourth layer. According to the requirement, कि जितनी layer हमें चाहिए उसके हिसाब से आपको काम करना है. But always remember to do in layer by layer process. So what is layer by layer means? पहले आपको light shade करना है, सबसे light. ठीक है, फिर आपको जो दूसरा मीडियम शेड नजर आ रहा है वो ऐड करना है, फिर जो आपको उससे थोड़ा डार्क नजर आ रहा है वो ऐड करना है, फिर डार्क, लाइक दैट. डायरेक्टली आपको डार्क या फिर जो शेड नजर आ रहे हैं वो नहीं रखने हैं. एंड दैट इज व्हाट यू डू, दैट इज व्हाट यू मेक द मिस्टेक. यू डायरेक्टली स्टार्ट डूइंग द शेड्स व्हाट यू कैन व्हाट यू आर एबल टू सी. फिर आपको यहाँ पे डार्क नजर आ रहा है, डार्क पेंसिल से उसको डार्क कर दो. लाइट है, लाइट कर दो. डार्क डार्क, नॉट लाइक दैट. ओके, इट डजंट वर्क लाइक दैट. Is done through layer by layer process. So always start with the light shading first. And for light shading, we have to use light pencil. So I'm going to use my 2H pencil for the base layer. Okay. Now, if you hold your pencil from the center or slightly backside, you get the proper grip of shading. ठीक है, आपका कंट्रोल अच्छा रहेगा आपकी पेंसिल के ऊपर अगर आप उसको सेंटर से या फिर पीछे से होल्ड करते हो. ओके, सो आई विल शेड इट दिस पोर्शन and along with that you can make your drawing more accurate or whatever detailing you have to do, you can do that as you are making it. Okay, जैसे जैसे आप बनाते जा रहे हो आपको जो भी चीज लगती है करनी है आप साथ में कर सकते हो. Right, so I will apply the base layer with the help of 2H pencil. Okay, then we will add another shade. जो आपको थोड़ा डार्क नजर आ रहा है, मीडियम नजर आ रहा है, वो आप ऐड करोगे. Got it? So with the same pencil, I will slightly make it dark around the corners. And yeah, for this purpose, use a sharp pencil again. कि पेंसिल शार्प नहीं है तो उसको शार्प कर दो ताकि आपका जो फिनिशिंग या फिर शेडिंग है वो ड्राइंग के बाहर ना जाए. ओके, अराउंड द कॉर्नर्स get a proper finishing as well. And try to maintain the same pressure. Do not apply too much pressure or do not shade very hardly.
Okay. Now I will shade in this area. In the same 2H pencil. And you can see how much light I am applying, the pressure, how much light I am shading. Though you have the dark values over here, यहाँ पे आपको dark shading नजर आ रहा है, फिर भी मैं light ही कर रहा हूँ. Okay, I'm not applying any kind of pressure on my pencil. As we are working in the first layer right now, हम दूसरी layer add नहीं कर रहे. We are just adding the base layer. Again, we'll add the base layer in this portion. ठीक है, सो पहले मैं आपको इस एरिया के अंदर A to Z करके दिखाता हूँ. Okay, done with the normal simple light shading. Now we will add different tones, different shades. So for that, अब मैं यूज करूंगा 4B पेंसिल का. I will be using 4B pencil for this area. यहाँ पे डार्क शेड है उसके लिए. And again, repeating the same thing, that use the dark pencil with the sharpen edge, sharpen point. ठीक है, ये पेंसिल को शार्प रखना if you want the proper finishing and proper detailing. And yeah, again I'm not applying complete pressure, I'm just shading very normally, my normal pressure. I'm applying a normal pressure on this pencil. And you know what? In such kind of drawing, अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल होती है तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है. Mechanical pencil means lead pencil, right? If you have such kind of pencil, it is the best, you can say, advantage for you. Why? Because it is very thin. इसका पॉइंट एकदम पतला होता है, तो आपको डिटेलिंग में छोटे एरियाज के अंदर बहुत हेल्प करता है. And if you use graphite, you have to make it pointed, you have to sharpen it again and again, right? So for such thing, you have this kind of pencil, it is the best for you. And for now, if you don't have, no problem, use the graphite pencil only, okay? This just what I'm showing you is the use of different tools. कैसे आप different tools को use कर सकते हो, कैसे उसका advantage ले सकते हो, okay? कहाँ से आपको उसको सही से use करना है. That is what only I'm showing you right now. Okay. Then again with the help of light pencil आप उसको अच्छे से mix कर सकते हो. तो आपने different shades की है उसको अपने dark shades के साथ जहाँ पे requirement है वहाँ पर ही, सब जगह mix नहीं करना.
Okay, this way you can do the finishing, light shading. Now सेम पेंसिल की मदद से मैं पहले बेस लेयर यहाँ पे रखूंगा, लाइट शेडिंग एंड वीडियो। बट बिफोर दैट मैं जो बॉर्डर है उसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ आउटलाइंस को, राइट, क्योंकि जब मैं इमेज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग माय आउटलाइंस आर स्लाइटली डार्क, सो आई जस्ट मेक इट लाइट। Okay, then with the help of light pencil which is 2H, I will do the base shading. And as I have told you from where to hold it, ठीक है, आप देख सकते हो मेरी लीड यहाँ पर है, मैंने होल्ड ऑलमोस्ट सेंटर से भी पीछे किया हुआ, ओके, एंड आई एम ट्राइंग टू मेंटेन द सेम कांस्टेंट प्रेशर थ्रू आउट माय एरिया। मैं सेम प्रेशर मेंटेन करूंगा, अदरवाइज अगर कहीं पे आपने ज्यादा प्रेशर लगाया कहीं पे कम लगाया तो आपका जो शेड है वो अनइवन हो जाएगा, ठीक है, कहीं डार्क कहीं लाइट हो जाएगा। तो मेंटेन द सेम प्रेशर ओवर योर पेंसिल। Yes, while doing the shading, you have to follow the shape of the object. मीन्स जिस डायरेक्शन में जैसा आपका शेप है उसी डायरेक्शन में आपको शेड करना है, ठीक है, जैसे मैंने अभी इस टाइम पे किया, और शेप इज लाइक दिस, कर्व, राउंड, ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने शेड किया है। तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू शेड अकॉर्डिंग टू द शेप टू गेट द रियल लुक। नाउ with the help of this 2H pencil मैं एक यू नो जो डिफरेंट शेड है यहाँ पे उसका मैं एक बॉर्डर बना देता हूँ, सो दैट आई विल गेट एन आइडिया दैट इन हाउ मच एरिया आई हैव टू मेक दैट डिफरेंट शेड। So just roughly draw the outline for that. Got it? And then मैं उसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगा डार्क पेंसिल की मदद से। Just see how much dark you have to do. बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। For this you can use 2B or 3B pencil.
Right now I'm using 2H pencil to make it smooth. अच्छे से मिक्स करने के लिए मैं 2H पेंसिल का यूज कर रहा हूँ. See, here you can do shading in both the direction. ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी शेड कर सकते हो, ऐसे भी. And if you see properly, if you observe the properly this portion आप देखोगे, you will notice that here the shades are done in this direction and here it is slightly in this motion. Okay, it is a mixture of straight and sideways. दोनों है. Alright, so now we will increase the value. Now we will do it more dark. Means हल्का सा dark करना है, ज़्यादा नहीं. Then from here as well. Okay, now here you can use one tool which is blending tool. Okay, which is brush. You can use such kind of tools to make your shading look smooth and soft. And यप इसको भी आपको अच्छे से यूज करना होगा. इसके ऊपर भी प्रेशर आपको अच्छे से अप्लाई करना होगा. Everything is needs to be done properly.
Okay, and then again with the help of the pencil, wherever you feel that you have to do some proper finishing or some changes or anything जो आपको लगे कि आपको ठीक करना है वो कर सकते हो. ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर दिया तो वो हो गया. No, again and again you can work till and unless you are satisfied. Okay, now here I will add another layer with the same 2H pencil. Okay, तो थोड़े बहुत डिटेलिंग्स डिफरेंट शेड्स नजर आ रहे हैं वो मैं सेम पेंसिल से रखूंगा. And why I'm using same pencil because I feel that I don't need any other pencil. मुझे जितना डार्क चाहिए वो मुझे इससे मिल जाएगा. That's why I'm using same pencil. ठीक है, अगर मुझे बहुत डार्क चाहिए होता तो I would have used another pencil. Okay. And here I will not use 2H because 2H से मुझे वो उतना डार्क नहीं देगा. So I'm going to use another pencil. So here I'm using mechanical pencil and इसके अंदर जो lead है वो है 4B की. Okay, the lead in it is of 4B grade. Right? And then इसकी मदद से मैं इसको मिक्स कर दूं. Okay, and afterwards जब डिटेलिंग की बारी आती है you can use this mono zero eraser. यहाँ पे आपको शाइनी इफेक्ट नजर आ रहा होगा, राइट? तो वो आप इसकी मदद से इरेज करके ला सकते हो. और else you can use this kneadable eraser also. कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा और काम करने की जरूरत है. So I'm doing it again and again. Alright, and सेम तरीके से आप इसके अंदर भी कर सकते हो. So पहले हम क्या करेंगे, हमारी आउटलाइन से उसको लाइट करेंगे एंड देन जो हमें शेड चाहिए वो ऐड करेंगे. एंड दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट ड्रॉ लाइट, ताकि आप इरेज कर पाओ बाद में. Right, you can see how simple way I have done the light shading with the help of 2H pencil.
and with the help of same pencil I am trying to create different shades. मैंने 2H के अलावा कोई पेंसिल यूज नहीं किया. But you can see how by blending I have created the shapes. Okay. Now let me show you this area. ठीक है, इसके अंदर हम हैंडल के अंदर शेड करते हैं. I will show you little bit amount of shading in that. So always start with the base layer जैसे कि मैंने आपको सिखाया है. And before that I am going to make it slightly light. And here I will show you little bit only because almost our time is going to get over. So I hope that आपको समझ आया होगी किस तरीके से शेडिंग करना है, प्रोसेस क्या करनी है आपको फॉलो. स्टार्ट विद द बेस लेयर फर्स्ट, मीन्स लाइट शेडिंग पहले रखनी है. देन स्टेप बाय स्टेप you have to increase the darkness. ओके, अब इसके अंदर मैं दूसरी लेयर ऐड करूंगा, दूसरे शेड्स ऐड करूंगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ये सेम 2H पेंसिल आई एम यूजिंग. Okay, now I will make it smooth with the help of my brush, and again very softly I am blending. तो ये अभी हमारी सेकंड लेयर है. ठीक है, इसके बाद हम इसको डार्क करेंगे, टेलिंग्स थोड़ी ऐड करेंगे. It's just the basic shading that we have done. ओके, नाउ जब हम इसके अंदर और शेड्स ऐड करते हैं तो इसके अंदर डेप्थ आती है. देन जो 3D लुक है वो ऐड होता है. ठीक है, 3D लुक क्रिएट होता है. So right now with the help of same 2H pencil I will add different shades. ठीक है, and from this side as well.
Okay, now I will blend it once again, and then I will add more dark shade. ठीक है, अब मैं यूज करूंगा मेरी मैकेनिकल पेंसिल का. Very precisely I will add dark shade which will give more depth, more real look to my artwork. एंड बहुत प्रिसाइसली आपको ऐड करना है, सब जगह देखना है कि कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है. अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यू हैव टू ऐड. ऐसा नहीं कि सब जगह पे एक जैसा डार्क या फिर लाइट करना है. ओके, ब्रिंग द वेरिएशंस. And here okay, and fill again with the help of light pencil. You can mix your shades. Okay, तो इट्स अ रिपीटेटिव प्रोसेस. आपको बार बार करना होगा ये शेड्स को ऐड करना, ब्रश की मदद से स्मूथ करना, फिर वापस ऐड करना, फिर स्मूथ करना. सो ये एक रिपीटेटिव प्रोसेस है जो आपको कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी जब तक आपको डिजायर्ड अमाउंट ऑफ रिजल्ट नहीं मिल जाता है. Got it? And then the last आपका स्टेप होता है वो होता है हाइलाइट्स का, शाइनी इफेक्ट लाने का. सो वो इरेजर्स की मदद से आप ऐड करते हो. ओके, लाइक दिस. तो भी डिटेलिंग्स होते हैं, वाइट एरियाज होते हैं, anything which you notice you can add with the help of erasers. So then if you add more and more you get more finishing and detailing. Okay,
So if I show you from the big distance, this is how you get the shiny effect, right? You can see slowly effect है वो आ रहा है. Okay. So now at least at more, uh, our time is almost over, so I cannot show you the complete figure, complete shading. It is not possible, but whatever I can share with you, the knowledge I have shared with you from starting, कि कैसे आपको एक ऑब्जेक्ट है उसको कंस्ट्रक्ट करना है फ्रॉम बेसिक्स, कैसे आप उसको डिवाइड करोगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर बाय मेकिंग सिंपल मार्किंग्स, आइडेंटिफाइंग कि आपको कितना बड़ा कितना छोटा बनाना है, फिर डिफरेंट शेप्स जो उसके आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वो ऐड करने हैं. फिर नेक्स्ट बारी आती है जब शेडिंग की, तो कैसे शुरुआत करनी है, विच पेंसिल यू हैव टू यूज फॉर अप्लाइंग द बेस लेयर. यू हैव टू यूज लाइट पेंसिल, right? Then you have to work in layer by layer form where you add different layers by increasing the values. सबसे पहले लाइट ऐड करते हो, फिर मीडियम, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, स्टेप बाय स्टेप यू कीप ऑन एडिंग द layers, and in between you make it smooth by using the blending tools. फिर डिटेलिंग के लिए हम मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करते हैं, हाइलाइट्स के लिए फिर उसके बाद हम इरेजर का यूज़ करते हैं लास्ट में, ठीक है. सो इस तरीके से आप अपने आर्ट वर्क को बिल्ड करते हो, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा वो चीज़. आई विश कि आपने कुछ सीखा है, ठीक है. सो नाउ वी आर डन विद दिस पार्ट, ठीक है. एंड नाउ हियर आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू दैट माय अपकमिंग क्लासेस. I'm going to take the upcoming classes on based on this only, okay, for kids. So first of all, let me know that how many of you want to learn more in this. Tell me that first. जिनको और सीखना है और इसके आगे सीखना है, let me know in the chat box. Okay, those who are beginner, those who are kids, for them it is going to be specially. जो kids है, जो बच्चे हैं, एंड जो बिगिनर है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप किड्स ही हो, यू कैन बी ऑफ एनी एज. सो मोस्टली इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू वांट टू स्टार्ट, it will be very helpful for those guys. Okay, so okay, Vihan, Ankita, right? So yep, you all want to learn, right? So I'm going to take a kids pencil live class which is starting from 1st July, that is from next Monday only. Okay, next Monday से शुरुआत हो रही है, 1st July से. I'm going to take a 1 month kids live class on pencil medium. And see, kids here means not only kids. Okay, again मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ये चीज, किड्स लिखा है इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ किड्स ही ज्वाइन कर सकते. एनीबडी दोज हु वांट टू लर्न फ्रॉम द बेसिक्स, दे कैन. ओके. So it is going to start from the 1st July, where you will learn 7 different realistic artworks, and along with that और क्या क्या चीजें आप सीखोगे. You will learn that drawing tools. Yes, I know you have already paid. Okay, some of you have already paid, so I will talk about that. So क्या क्या चीजें आप सीखोगे, सबसे पहले tools and materials के बारे में, पेंसिल, पेपर, इरेजर, ठीक है. देन सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज की एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी है एज अ बिगिनर टू मेक योर फंडामेंटल एंड टू मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग. एंड आज आपने वो चीज नोटिस भी की होगी, काफी सारे लोगों ने, जिन जिन लोगों ने ये बनाए उनको काफी दिक्कत भी आई होगी, राइट? यू माइट हैव प्रॉब्लम, फेस सो मेनी प्रॉब्लम. सो टू इम्प्रूव दैट, व्हाट important exercise are needed which will make your base and fundamental strong. Then what is shape and form, उसकी study करेंगे. How to shade using right pencil and right tools. How to draw and shade the objects in the easiest way. ठीक है. Then different topics जो है, fruit drawing है, flower drawing है, still life drawing है,
वो सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी इस 1 मंथ के क्लास के अंदर, राइट। सो आई विल शेयर विथ यू कि कौन कौन से आर्टवर्क्स जो है आप सीखोगे। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बोला कि डिफरेंट शेड्स के बारे में, जो बेसिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखने मिलेगी वो है शेड्स। ठीक है। अगर आप इस चीज को नहीं सीखोगे, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग इन दिस आर्ट फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिफरेंट शेड्स, कैसे उनको ऑप्ट करना है, कौन सी पेंसिल से कौन सा शेड आपको अप्लाई करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न एज अ बिगिनर। ठीक है। तो वो मेन चीज आपको सीखने मिलेगी सबसे पहले। देन जो डिफरेंट आर्ट वर्क्स जो मैंने बताया कौन कौन से, वो ये सारे हैं। फर्स्ट इज दिस, सेकंड दिस फ्लावर। इन फ्लावर ऑल्सो यू हैव टू फ्लावर्स। ओके, फर्स्ट ये वाला है, देन सेकंड इज दिस वन, देन द थर्ड इज फ्रूट। ओके, फ्रूट के अंदर भी यू हैव थ्री फ्रूट्स। फर्स्ट इज दिस चेरी, एंड सेकंड वन इज दिस, थर्ड वन इज एप्पल, then comes the last one which is your still life drawing। ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी। एंड द टाइमिंग फॉर द क्लास will be from 6 p.m. to 7 p.m. in the evening, 1 hour per class, and the days will be 4 days from Monday to Thursday। ठीक है। वीक में 4 क्लास होंगे, 6 to 7 p.m., 1 hour per class। So those who are interested, let me just share you that the fees of this class is 1700। Okay, the fees of this class is 1700, but those who join right now, I will give you 200 rupees extra discount, which means you can enroll at the price of 1500। राइट, अगर आप अभी ज्वाइन करोगे तो आप 1500 के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। एंड why I'm telling you these things, because 4 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं इस क्लास के बिफोर, इस क्लास के पहले। जो ये हमने वर्कशॉप ली है मैंने अभी, इसके पहले ऑलरेडी 4 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। Yes, those who have paid more, do not worry, if you have paid more I will give you the uh, no refund amount जो भी आपका बनता है, so don't worry about that। Got it? So let me just tell you that already 4 स्टूडेंट्स ने पे कर दिया है, so last 11 सीट्स बाकी है। So if anybody of you are interested, please let me know in the chat box, those who are going to join right now, so that I can share with you how you can join। Do not worry, those who have paid more, you will get the remaining amount, okay, out of 1500, so don't worry about that। Okay, so those who are asking for joining, the interested students can pay on this number using the different platforms, that is Google Pay, Phone Pay, Paytm or UPI। You can pay on this number, okay, and after the successful payment, you share the screenshot with me। जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, and you have to send the screenshot on this number, okay। For enrollment you have to use this number, and for sharing the screenshot use the second number shown below। Got it? And those who will enroll right now, they will only be able to pay the amount of 1500। इस क्लास के बाद अगर आप ज्वाइन करोगे, the price will be 1700। okay। So let me know as soon as you pay, please send the screenshot।
And yes, if you have any questions, if you want to ask me anything, now you can ask me. Okay, कोई भी questions, कोई भी query आपको होती है, you can ask me right now. And the class will end at 9:55. Okay, you're most welcome, Minal Khair. Thank you so much for joining. Thank you so much. Last 3 minutes to go, and then I will end this session. And after that, if anybody wants to enroll, the enrollment price will be 1700. Okay. Again, I am repeating, those who are enrolling, make sure for enrollment, for payment, you use this number shown over here, 799-0261-554. Okay. And when you share the screenshot, share on this number 9978982496. So let me just read out the name of the students, those who have joined. We have Likhita in the group, then we have Papitha, and we have two more students, but the name are not visible. Okay, so make sure that only 11 seats are left, and the last 1 minute to go. As soon as the timer goes down at 9:55, I will end this session. And if anybody is making the payment and if you are facing any issues, you can let me know that as well. Okay? All right, so the time is over, the time is up. So now the enrollment price will be 1700. Okay, so thank you everyone for joining. Thank you so much. Now we will be ending this session. I hope that you have learned something, you have learned so much. And make sure that you use this. ठीक है, ऐसा नहीं कि आज आपने सीखा है तो आप इसको फिर यहीं तक छोड़ दो. Okay? Make sure that you practice it daily if you want to improve. Without practicing, you will not get anything. ठीक है, एक बार करने से आपको सिर्फ एक ही बार याद रहेगा. अगर आपको लाइफ टाइम याद रखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एंड मेक श्योर कि आप जो प्रैक्टिस करो वो भी सही से करो. ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली आप
करने लग जाओ. Okay, make sure you learn correctly, you learn properly, you learn in a proper systematic way. Okay, so that's it for the session. Thank you so much for joining. And to all my students, we will meet in the next class, which starts from Monday. Okay, so make sure you join the sessions from the Monday. We have the 1st July. So 1st July से हमारे क्लास शुरू होंगे. तो टाइम पर ज्वाइन कर लेना and make sure कि you are ready with the tools and everything. Okay, and timing of the class I have already shared in the description of the group. So वहां से आप check out कर लेना हमारे class का timing क्या है. All right, so that's it. We'll see you in the future. Till then, bye bye and take care, everybody. Good night.